Okay, let's see the violence against women. Violence refers to the act that cause the physical and the mental harm to the victims. That means violence को reference में, that means any cause to the physical, that means physically या mentally किसी को कुछ harm होता है, that is called the violence. In India, there are several cases of the violence against women within the household and also elsewhere. So if you talk about India, women are subjected to the violence, not only the physical violence, but the mental violence. Okay, not only outside the home, but also inside the home also. Okay, let's see the types of violence against women. Violence against women can be classified into three groups. That is, first, the criminal violences. That means women are subject to criminal violence such as rape and molestation, adaptation and the murder. Then there will be trafficking of women. Under that, we have bride burning, sale or auction of the women, or the torturing of the women that may lead to the suicide. That means when you talk about the criminal violences, that is against women, that is women are subject to the rape or molestation, even when the women are abducted, or murder and trafficking. That means kidnapping the women and selling the women. Then there is a bride burning and auction of the women, and sometimes torturing the women in such extent that it may lead to the suicide of that women. This is all come under the criminal violences. Then there will be domestic violences, that is inside the house. Okay, that is dowry harassment, that means harassing the women for the dowry. Then there is a sexual abuse by the family members, that means the family members ill-treating the women or giving the bad words to the women, or maltreatment of the women, that means the women is not treated properly, or the malnourishment of the female, that means not giving the proper food to eat, or the verbal abuse of the women by the family member, that means giving bad words, or not taking the proper words, not using the proper words, or the isolation of the females within the household, that means women is isolated only of doing the household work, or the denial of the share in the property, or women is not given the share in the property. Okay, this is all domestic violence against women. Like this is a social violence, in that we have eve teasing and the lewd comment, that means women's or girls are teasing by giving using the words, abusive words, or forcing a young widow to commit sati, even though the sati system is abolished. Some states of India even forcing the young widow to commit sati. Operation of the widows, that means widows के साथ restriction है, बहुत सारे restriction on the widows for their movement, for the wearing of the clothes, even for the remarriage, or the sexual harassment at the workplace. And the women, if go out for the work, even at the workplace, women are subjected to the sexual harassment by the using of the different words, abusive words. Okay, and then there will be a sexual abuse in the public transport. If that woman is using the public transport, even there the women are subjected to a sexual abuse. And the false witnesses in the court against women, and sometimes even if women take that person, or if women go to the court, there will be a creation of the false witnesses among the by the man against the women. So women are subjected to all this violence. Okay, let's see once again. Three types. One is criminal, that is criminal. Second one is the domestic, that is inside the home. And third one is a social. Okay, person responsible for the violence. The violence are the family. See, if you see the data, according to one study, 60% of the women are abused by their own family member, and the 40% bystander. If you see the data, that means one study shows that women abusement, or the women harassment, or the women violence, 60% is because of their family members, and 14% by the strangers. Family members include the parents and the other relatives or the in-laws. Women are subjected to violence by their own parents, and sometimes by their relatives, and sometimes by their in-laws. Okay. For instance, there are cases of the rapes by the victim's own father or the other male member of the victim family. At time, mother also. Okay. That means there are cases where the rape victim जो है वो खुद उसका डैडी था. That means the own father और घर का family member. Okay. I hope this one is clear, student. Are you understanding? Student, please reply. Yes, ma'am. करती है. There are in-laws also harass the victim, especially the young bride for the dowry. That means that sometimes in-laws also harass the young bride because of the dowry के लिए harass करते हैं.
The strangers include any other person other than the family members, including the neighbor and others. And sometimes women will be harassed by the strangers also. The strangers में उसके neighbors भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है. Okay. Type of victimizers, the following are the types of the victimizers of the women. Okay. अब ये जो है विक्टिमाइजर्स जो है वो कैसे, पर्सन हैविंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो विमेन्स को हैरास करते हैं वो कौन से टाइप के लोग हैं जो विमेन्स को हैरास करते हैं. पर्सन्स हैविंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओके, जो ये साइकोपैथ्स होते हैं जिनका पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, या दोस आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, जो पर्सन डिप्रेशन में है या जिसको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है. पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल, वो पर्सन जो अल्कोहल ले रहा है. दोज लैकिंग रिसोर्सेज, स्किल एंड अदर्स. Person who are possessive, suspicious and dominant in nature. Those who have facing stressful situation. Okay, this means ये जो लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई है, या जो डिप्रेशन में है, या जो अल्कोहल लेते हैं, या जो पॉजिटिव है, जिनको शक करने की आदत है, या जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, या जिनके चाइल्डहुड में प्रॉब्लम हुआ है, ये सारे लोग जो है वो विमेन को हैरास करते हैं. Okay. Now causes of the violence against women. What are the causes? Women's के जो women's को जो सताते हैं वो क्या कौन से basis पे है? First is a money related problem. Okay, violence may take place on account of the money related problem. For instance, women may be harassed for the dowry by husband or the laws. That means they related to money, because dowry husband जो है wife को dowry के लिए harass करता है. The violence may also lead to the non-compliance of the unreasonable demand from the money from the working wife. Okay, sometimes the husband is demanding the money from the wife, those working wives say, for the gambling on the drinking liquor, and if women is not giving the money, that time that harassment start. Next one is the personality trait. The personality trait may compel a person to indulge in the violence against women. Okay, in first cases, it is caused because of the money, because monetary issue है, पैसे के लिए सता रहे. Second, personality trait. That means the person is obsessive, passionate, immoral, jealous. Okay, that means person जो है over obsessive है, या वो jealous husband है, वो jealousy करता है. Okay, उसका जो personality ऐसी है कि उसका suspicious nature है, वो हर चीज को शक से देख रहा है. Okay, या फिर वो बहुत obsessive है अपनी wife के लिए, या अपनी wife के ऊपर doubt करता है. तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपनी wife को harass करता है. Next is a victim precipitated violence. At times, women are blamed for the cause of the violence. The incident behavior of the victim may result in the violence. For example, nagging behavior of the wife may be severely irritate the husband, which may result in the domestic violence. That means sometimes जो behavior of wife का, that means wife जो है continuously अगर वो husband को irritate कर रही है, तो उससे भी husband जो है उसको nagging behavior की वजह से भी domestic violence create होता है. Then there will be a stressful situation. Suppose घर में stressful situation है. For example, children may not behave properly. Okay, you can see the underlined word. If the children is not behave properly, okay, so even that is blamed to women. That means कि women को इसके लिए blame किया जाता है. It is a duty of the mother to take care of the children. It is not a duty of the father. That means again women's, because the children behavior women's has been accused. Then there will be a male dominance. Indian society is a male dominant society where females has given the secondary position, okay, after the male. At that time, women are subjected. Women को ऐसा बोला जाता है कि women are dependent on male. Okay, everything जो भी है उनको अपने मेल मेंबर ऑफ द फैमिली के ऊपर डिपेंड करना है. ओके, दे डोंट हैव, उनको अपने पॉइंट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं. मेल्स आर ऑलवेज राइट एंड फीमेल्स कैन नॉट करेक्ट देम. Next, there is a addiction or the intoxication. That means a person or the male member of the family is taking alcohol or drugs, जिसकी वजह से उसकी हालत सही नहीं है. At that time भी वो जो behavior है वो सारा physical assault या जो भी चीजें अपनी wife पे उतारता है. Okay, because he has taken the drugs or alcohol, so he is not in the position. Then there's the overexposure to the dark media. Okay, dark media is also showing women's in a just serials, well, women related serials, well, women are subjected to various. You see the serial की जो main lead होती है heroine, she's always crying. Okay, and उसके अंदर violence होता है, violence बर्दाश्त करती है. या there are the overexposure to the blue films that may lead to the violence against women. Generally, the teenagers and the youngsters are involved in the types of violence. That means media जो है, definitely media is playing the positive role also, but the dark side of media also create a violence for the women. Then there is a literature action.
Violence may be of the retaliatory nature. For instance, a male may be falsely implicated by a female in certain crime cases, including rape. Such person may develop the hatred. That means some women has falsely कभी किसी male को उसने false कंप्लेंट किया था, तो डेट पर्सन जो है उसने वुमेन्स की इमेज बना दी कि ऑल वुमेन्स आर बैड. So in such a person may develop the hatred for the women. Okay, one woman has done something bad, so that hatred is for the entire female category. Okay, so these are the various causes, okay, that violence against women. Let's see the effect of that, because we have seen the various causes कि ये सारे causes है, तो इसका women's पे क्या असर होता है, okay, उनकी mental health पे क्या असर होता है. First, the victim may be mentally affected. Okay, we have seen the various causes कि women's के साथ को बहुत सारे causes होते हैं society में, by their family members, or sometimes by their in-laws, or sometimes by their strangers also, by their wife, everything has been blamed. So उस पर जो mental effect होता है, in the case of the abduction, in the rape, the effect may be severe. That means if the woman is subjected to this severe things, okay, वो mental trauma में चली जाती है, lifelong उसके ऊपर इसका effect होता है, mentally वो stable नहीं होती है. Then there will be a physical effect. The victim may affected physically also. This is true in the case of the wife battery or the physical assault. That means if the husband is beating the wife at that time, वो physically weak हो जाती है. Okay, then there is effect on the health. Overall उसकी health जो है वो proper नहीं होती है, because उसको nourished balanced diet नहीं दी जाती है. Okay, the health of the victim may be badly affected. The victim may not put proper food, even the denied proper food. जो in-laws है उसको प्रॉपर फूड नहीं देते. कभी कभी उसके खुद के पेरेंट्स जो है उन्होंने भी उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया था बिफोर मैरिज, तो उसके हेल्थ पे उसका जाता है. एंड दिस लीड टू द क्रोनिक डिसीजेस. Okay, that is chronic diseases such as tuberculosis, जिसको भी हम लोग बोलते हैं TB. Also, effect on the health may lead to the lower efficiency at home, at the workplace. A victimized woman is employed, and because उसकी body जो है उसका proper growth नहीं हुआ है, उसको बहुत सारी problems है, इसलिए वो proper जो है घर का या बाहर का काम नहीं कर सकती है. Then the social effect of the victim. The victim may be affected socially also. For instance, in the case of the rape, the victim may not be able to move freely in the society. Okay, if the woman is subjected to rape, the girl or that woman cannot move in the society freely. People, especially the male sonomist, may pass a livid comments. जो मेल रहते हैं उस पे कमेंट पास करते हैं. Okay, effect on the family members of the victim. The family members also affected with the violence against women. Okay, for instance, maltreatment by the in-laws or the husband can adversely affect the children if the children are exposed to the violent behavior. That means कि अगर women's के साथ violence behavior हो रहा है और उसका बच्चा उसको देख रहा है, तो वो जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग पे भी उसका असर हो रहा है. And then maybe उसका violent behavior जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर भी वो violent behavior आ जाएगा. Effect on the society. Women's against violence against women may also adverse affect society. For instance, in several cases where there is a violence against women such as rape, murder, then the civil disturbance in the area. That means अगर suppose कोई रेप हो गया है या फिर कोई मर्डर हो गया है, तो वो पर्टिकुलर एरिया भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है. इसकी वजह से सोसाइटी को भी इफेक्ट होता है. ओके, सो दिस आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट women. Okay, now let's see the steps to prevent the violence against women. So we have seen the causes के कौन-कौन से causes है, we have seen क्या उसका effect क्या होता है. Now let's see कि कौन से steps हम लोग ले सकते हैं ताकि women जो है उनको protect किया जाए. Okay, first the government should effectively enforce laws that protect the women from the discrimination and the violence, including the verbal abuse, rape, etc. That means it is a duty of the government कि वो ऐसे acts बनाए जिसकी वजह से women's को जो है discrimination नहीं हो. That means कि this is male, this is female, there is no discrimination. Society में male और female के बीच में कोई discrimination ना हो. And some people if verbally abuse कर रहे हैं या rape attempt करे women के साथ, तो उनको strictly जो है punish किया जाए. Second, government should provide women with the access to the legal representative and the opportunity to pursue justice against the perpetrators of the violence again through the formal legal system. Now in legal system भी ऐसा है कि women को जो है help करना चाहिए ताकि अगर इसके साथ कोई crime हो तो वो आके
अपने आप को जो है जस्टिस दिलाने की कोशिश करें. Equal opportunities to the women as man with regards to the employment, payment of the wages and the salaries. That means the government should provide an opportunity कि मेल की और फीमेल की सैलरी जो है वो एक होनी चाहिए. ओके, there are certain cases and there are certain sectors that are reserved only for the male. ओके, वहाँ पे फीमेल्स को जो है इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं मिलती है. विमेन्स को कम सैलरीज मिलती है, उनकी सैलरी कम होती है. ओके, उनकी वेजेस कम होती है. तो देयर शुड बी इन सम जॉब्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि विमेन्स के लिए नहीं है, only for male. तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए. The judiciary should impose a strict punishment in the case of the women violence, which will be a deterrent. That means कि if something happens against the women, तो जो judiciary है, जो court है, वो severe punish करना चाहिए. Okay, criminal को. The parent and the education institute should encourage a child to pursue the secondary and the higher education. Okay, women's जो girl है या जो women है, they should be encouraged by their parents or the educational institutions like the teachers. Okay, कि वो secondary, not only the primary education बल्कि आपके secondary and higher educations भी ले. The family members should encourage the women members to do financial interdependence. Independence. Okay, that means कि वो financially independent हो, हमेशा वो male member of the society पे dependent ना हो. Okay, वो monetary खुद अपने independently सारे काम करे. The women should be empowered themselves of being aware of rights. Women should be aware कि उनके कौन-कौन से rights है. The women may seek help of the women organization. अगर women के साथ problem हो तो women organization हो, police हो जो उनकी help कर सके. The women may take a self defense. Okay, self defense technique like karate या ऐसी कोई self defense techniques जो है उनको सिखाना चाहिए ताकि वो अपने आप को protect कर सके. The women should be educated about the issue and discussion forum. There should be a more open discussion forum होना चाहिए जहाँ पे women आके अपने आप को express कर सके. And women should be educated. The social organization can increase awareness to stop violence against women by highlighting unacceptable behavior and condition that some women experiences. Even social organization जो है वो awareness create कर सकता है. Okay, वो issues वो जहाँ पे women जो है कुछ unacceptable behavior है जो women के साथ होता है, जो women खुल के नहीं बता सकती है, तो social organization को motivate करना चाहिए. The media should portray the women in the media plays a very important role. तो मीडिया को पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए, मीडिया को पॉजिटिव रोल में विमेन्स को दिखाना चाहिए. ओके, इंस्टेड ऑफ डिफेम या सेकेंडरी रोल या इंफीरियर दिखाने की बजाय मीडिया को उनको पॉजिटिव रोल में या हायर रोल में दिखाना चाहिए. सोशल मीडिया, अगेन सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है नाउअडेज. सोशल मीडिया ऑल्सो जो विमेन्स के साथ हरासमेंट होता है, सोशल मीडिया में भी वो सारी चीजें आना चाहिए. देन देयर शुड बी the company should set up the women grievance cell. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक women grievance cell होना चाहिए जिसको बोलते हैं WGC. ओके, जहाँ पे women's को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ही कंप्लेंट लॉन्च कर सके एंड वहाँ पे उसको जो है जस्टिस मिले. The corporate policy should be women friendly, such as the maternity benefit, flexi working hours and the career development. Corporate policy just mean कि अगर women वहाँ जाके काम करिए corporate sectors में तो उसको maternity benefit मिलना चाहिए या flexible working women चाहिए because she has to adjust with the family children also. तो उसका working hour जो है वो flexible होना चाहिए, rigid नहीं होना चाहिए. Okay, ताकि वो अपने career में improve कर सके. Okay, so these are the various things, various measures can be taken by the government or the non-government organization to improve the position of the women in the society. It plays a very important role. The mass media include the TV, radio, newspaper, magazine, outdoor holding, cinema, social media network and so on. The mass media plays a positive as well as the negative role in the portrayal of the women. That means mass media is showing the women in the positive role as well as the negative role. Okay, let's see one by one. What is the positive role of the mass media towards the women? First is highlighting the women related problem. Mass media plays a very important role of highlighting the women problem. Okay, violence against women related incident are highlighted. That means if some incident happens, the media like newspaper or the televisions are highlighted. Okay, तो इसकी वजह से कभी-कभी क्या होता है कि जो जुडिशरी है, पुलिस है, उनका भी अटेंशन जो है वहां पर चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वहां पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, मुंबई बेस्ड जज that is to a lady, एक lady judge give a light punishment to the rapist. The media, especially the newspaper, denounced the judgment
and the lady judge was subsequently transferred. That means कि एक lady judge ने रेप के लिए एक लाइट पनिशमेंट दी थी. Then जो न्यूज़पेपर था उसने इसको वो किया, लोगों तक पहुंचाया, एंड देन मीडिया तक ये बात पहुंची, देन हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंची, एंड देन वो लेडी जज को वहां से ट्रांसफर कर दिया. ओके तो विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है या कुछ इंसिडेंट्स ऐसा है जो मीडिया रिपोर्ट कर सकता है. ओके next is the social support to the women. The mass media provide the social and the moral support to women in India. The mass media okay social जो social support है women को social support मिल सकता है. okay social support में क्या होगा कि जो social related problem है women's की उसको भी media जो है वो highlight कर सकता है. For example see this concern for the girl child, that means कि we have seen the gender discrimination, girl is less compared to the boys. तो यहाँ पे भी मीडिया हाईलाइट कर सकता है. देन देयर इज एंटी डाउरी कैंपेन, डाउरी से भी हरासमेंट होता है तो एंटी डाउरी कैंपेन. और द मैटरनल द चाइल्ड केयर, मैटरनल और चाइल्ड केयर के बारे में भी जो है अवेयरनेस फैला सकता है मीडिया. देन देयर इज द वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी. सम वुमेन who has proved themselves, for example दिया है वहाँ पे देखो किरण बेदी, then there is a Kiran Mazumdar, then there is a Mrs. Indira Gandhi, Mother Teresa, Saina Nehwal. These people, these women are from the different field and they excel in the different field. The media, the newspaper can highlight इनकी स्टोरीज. ओके कि हाउ दिस बीइंग अ वुमेन भी ये इतने सक्सेसफुल कैसे हुई. ओके दिस एनकरेज द अदर पेरेंट आल्सो. पेरेंट्स को एनकरेज करेगा कि वो अपने डॉटर्स को भी एनकरेज करे या मोटिवेट करे कि वो भी आगे जाके अपना करियर जो है परस्यू करे. women empowerment, media boost morale of the women and make them fight against the injustice. ओके डेट मीन्स के मीडिया जो है वुमेन्स को बूस्ट करना चाहिए कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट में फाइट करे. देखो वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक विलेज में एक बार था. ओके जहाँ पे अल्कोहल मिलता था और जो मेल मेंबर्स थे वो फैमिली मतलब वो पर्टिकुलर विलेज के वो मेल मेंबर्स जाके वहाँ पे रोज अल्कोहल पीते थे. तो सारी विमेन्स ने गई और वहाँ पे जाके अपने प्रेशर से फाइट किया और वो जो शॉप था वो बंद करा दिया. डेट मीन्स कि अगर विमेन्स की ऐसी स्टोरीज जो है मीडिया में पब्लिश होगी तो इट इज ड्यू टू बूस्ट द विमेन इन द अदर विलेजेस आल्सो. ओके so all this, with the help of all this, the media can play a positive role. Now let's see the negative role of the mass media. Okay depict the women in the poor taste. Okay women को जो है वो poorly पेश किया. For example advertisement, if you see the advertisement, every advertisement whether that is a male related product के लिए भी अगर advertisement होगा तो you can see a female. Okay like for example a shaving cream या और भी कुछ मेल चीजें हैं जिसमें वीमेंस की जरूरत नहीं है लेकिन वहाँ पे भी वीमेंस को दिया जाएगा. एंड वीमेंस आर वेयरिंग अ वेरी स्मॉल क्लॉथ, उनके क्लॉथ भी प्रॉपर नहीं है, उनका पोस्चर भी प्रॉपर नहीं है. ओके दैट मीन्स के स्पेशली यंग मॉडल्स को वल्गर पोस्ट में फोटो निकालते हैं वो लोग. सो ये सारी चीजें जो है वो विमेन को नेगेटिव इसमें प्रेजेंट करती है सोसाइटी में. देन द ड्रामेटाइज विमेन रिलेटेड वायलेंस प्रोग्राम, देयर आर वेरियस टीवी पे, टेलीविजन पे, वेब सीरीज पे जो है वायलेंट प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें विमेन्स को जो है विमेन्स के साथ प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें दिखाया जाता है विमेन्स जो है वो सेकेंडरी पोजीशन पे सब कुछ विमेन से कर रही है या कुछ फिल्म सीन्स है. ओके ये सारी चीजें जो है वो नेगेटिव वे में प्रेजेंट करती है विमेन्स को. देन देयर इज पब्लिसाइज डेकोरेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द विमेन्स. ओके पब्लिकली भी विमेन्स के साथ जो है वो गलत रिमार्क्स लोग दे रहे हैं. ओके दैट मीन्स के पब्लिकली देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक you can see this point. सितंबर 2018 में वन पॉलिटिशियन का एक रिमार्क है. वो पॉलिटिशियन के पास एक पर्सन आया और उसने बोला कि सर आई प्रपोज हर बट शी रिजेक्टेड मी, प्लीज हेल्प मी, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर. दैट मीन्स एक पर्सन ने जाके उसको बोला कि मैंने उस गर्ल को प्रपोज किया लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. तो वो पॉलिटिशियन ने उसको बोला फर्स्ट यू ब्रिंग योर पेरेंट, अगर आपके पेरेंट को भी वो लड़की पसंद है तो मैं वो लड़की को किडनैप करूंगा, आई विल किडनैप दैट गर्ल ओके फॉर मैरिज. तो ये जो स्टेटमेंट था वो राम कदम ने दिया था. डेट इज वो बीजेपी का एमएलए था फ्रॉम घाटकोपर मुंबई. ओके सो ऑल दिस जो है पॉलिटिक्स भी जो पॉलिटिकल पीपल है वो उनके कमेंट्स भी विमेन्स के अगेंस्ट होते हैं. ओके उसके बाद लेटर डेट एमएलए टेंडेड अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर द रिमार्क. उसके बाद उसने ये जो विमेन्स के खिलाफ ऐसा बोला था तो उसने अपॉलॉजी किया, उसने माफी मांगा. बट दिस इज ऑल नेगेटिव वे में विमेन को प्रेजेंट करते हैं. ओके
Okay, so we have seen key portrayal of the women. That means women, mass media plays a very important role by women को positive role में भी negative role में भी वो present कर सकता है. Okay.